हाय, टुमारो इज़ माई बर्थडे और आज मुझे जो कुछ पॉसिबल हो सकता था, फीवर, कोल्ड, कफ, तीनों चीज़ें हो गई हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ईयर बिकॉज आई थॉट ऑफ डूइंग मल्टीपल थिंग्स विद माई फैमिली, बट हियर आई एम। आज सुबह से मैं ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा दिन बेड पे थी बिकॉज ऑफ माई फीवर। Thankfully, fever is very less now, but the cold and the cough is still there. आज रात जैसी भी निकल रही है, बस आई होप कल तक आई एम ऑल गुड। मतलब भले ही कोल्ड रहे बट फीवर पूरे तरीके से ठीक हो जाए, क्योंकि द एनर्जी लेवल इज़ इन नेगेटिव राइट नाउ। इस हफ्ते आई also couldn't film a lot of videos and जो भी प्लान किया था वो इस हफ्ते कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डेज से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मतलब वो धीरे धीरे बिल्डअप नहीं होता फीवर से पहले की। वैसे मेरी भी कुछ गलतियाँ हैं। मैंने कोल्ड फ्रूट्स सीधा फ्रिज से निकाले हुए खाए थे, एंड व्हेन आई वॉज ईटिंग दोज फ्रूट्स मुझे लग रहा था कि मेरा गला ख़राब हो जाएगा, बट मुझे भूख इतनी लग रही थी, मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गला ही ख़राब होगा। अब वॉट आई कैन डू इज़ टेक माई मेडिसिन्स एंड टेक प्रॉपर रेस्ट, ताकि कल सुबह आई वेक अप विद सम एनर्जी एंड स्पेंड अ गुड टाइम विद माई फैमिली। बहुत सारी चीज़ें प्लान की थी मैंने इस बार के लिए, बट तो इससे ये भी पता चलता है कि हमेशा जो प्लान किया वो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड ये भी समझ आता है कि हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए अपने खाने में या जो भी। अभी मैं बीमार हुई हूँ, मम्मी का मूड ज़्यादा ख़राब हो गया बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ ऑलवेज एक्साइटेड फॉर थिंग्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो एंड लेट्स होप अच्छा सा बर्थडे जाए। लेट्स होप फॉर गुड हेल्थ एंड गुड फ्यूचर एंड गुड कॉमन सेंस, जैसे कि ठंडे फ्रूट्स ना खाना या ठंडी चीज़ें ना खाना। होप पे दुनिया खाया मैं। वेलकम टू माई बर्थडे व्लॉग एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। मैं पूरे 4 इयर्स बाद अपने घर वालों के साथ अपना बर्थडे बनाने वाली थी मतलब कल सुबह तक आई एम बेटर, थोड़ी एनर्जी आ गया वापस। बस डिनर पे क्यों खाए मैंने ठंडे फ्रूट्स, मैंने क्यों खाए, जबकि मुझे पता फील हो रहा था कि अगर मैं इतना ठंडा खाऊंगी तो हो सकता है मेरा गला ख़राब हो जाए। लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि गला ख़राब होने के साथ साथ जुकाम भी हो जाएगा और फीवर भी हो जाएगा। डोंट लिसन टू योर टंग बट लिसन टू योर ब्रेन एंड डोंट डू सच थिंग्स। बस मैं बेड पे लेटे लेटे अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहती। आई वॉन्ट टू गो समवेयर और सेलिब्रेट इट नाइसली एट होम, लाइक डांस एंड जम्प। Let him cook. Let him cook now. ये बर्थडे फोटो मिली है प्लीज। नहीं बर्थडे
था, भले वीकनेस हो रही थी बट आई फील गुड एंड energized because of these small things and all wishes from my friends and family. So yeah, चलते soon है and hopefully कल better health के साथ उठें. So bye good night. मेरा ना के बराबर ही है बट खांसी बहुत हो रही है मुझे. खांसी में होता है ना, यू कांट स्लीप प्रॉपरली, तो वही हुआ मेरे साथ. थैंकफुली फीवर थोड़ा कम है, अब वो दोबारा ना आ जाए. That's why आज तो मेरी पसंद का खाना मिलेगा. Yeah, boy. Birthday is done. I'm still sick, but कोई बात नहीं. मैंने जो भी आज के लिए प्लान किया था वैसा कुछ हो नहीं पाया. ये मम्मी पापा और भैया के सारे एफर्ट्स दैट दे मेड टू मेक माई डे स्पेशल एंड माई फ्रेंड्स मेड मी फील स्पेशल इवन व्हेन वी आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सो दैट मेड मी फील वेरी हैप्पी, नाइस and blessed and grateful. Having a big party, a fancy party or a trip is no doubt very good. But you know, the real joy can come from the most simplest moments. So while this vlog might not be what I actually planned it to be, but it still taught me a valuable lesson, and little things matter a lot to me, and these little things made my day better and better and better. Thank you to my family, thank you to my friends, thank you to everyone who wished me today. So it's okay कि कभी कुछ चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, कोई बात नहीं. Because sometimes the most special memories are the ones that you never saw coming. So today was a perfectly imperfect birthday. And I'm thankful and grateful for all the blessings, wishes and efforts that everyone made to make my day special. So thank you everyone, and I'll see you in the next one. Bye, good night. Oh, also this is for you all. Okay, bye.